Very good morning to you, all of you. Hope you all are fine and fit at your homes. So today from 1st October we are going to start final term syllabus. In EVS today we'll study means of transport. Now first of all tell me what is transport. You know what is transport? Transport क्या होता है, हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे. It is the movement of human, animal or goods from one place to another. एक प्लेस से जब दूसरी प्लेस पे जाना होता है तो वी यूज़ ट्रांसपोर्ट. सपोज आई हैव टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हाउ विल आई गो, कैसे जाऊँगी मैं? आई कैन वॉक, मैं वॉक कर सकती हूँ. आई कैन रन, मैं भाग सकती हूँ. बट वॉट इफ़ आई हैव टू गो वेरी फार अवे फ्रॉम माई होम, मुझे अगर बहुत दूर तक जाना है तो मैं कैसे जाऊँगी? आई नीड अ ट्रांसपोर्ट फॉर इट. हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट चाहिए उसके लिए. आई कैन यूज़ बाईसाइकिल, रिक्शा टू गो नियर बाय प्लेसेस. आई कैन यूज़ फॉर लॉन्गर डिस्टेंस स्कूटर, कार, बस. आई कैन ऑल्सो यूज़ बस, ट्रेन टू गो फ्रॉम वन सिटी टू अनदर. जब एक सिटी से दूसरी सिटी पे जाना होता है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? कार, बस, ट्रेन एक्सेट्रा. ओके, सो देर आर 3 means of transport, modes of transport or types of transport you can say. First one is land transport, second one is air transport, third one is water transport. First is land transport. Now what is land transport? Transport that moves on road, that is called as land transport, like car, bus, truck, train etc. These are land transport. Now we'll come to air transport. There are 2 examples of air transport: aeroplane and helicopter. Aeroplane or helicopter. Air transport is the fastest means of transport and it is very expensive. बहुत एक्सपेंसिव होता है एयर ट्रांसपोर्ट. और फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जब हमें बहुत जल्दी कहीं पहुंचना होता है वी कैन गो बाय एयर ट्रांसपोर्ट. ओके. थर्ड इज वाटर ट्रांसपोर्ट. What the 2 example of water transport are ship and boats. Water transport is the slowest means of transport. Ships are used to carry goods or people to distant places. Okay, so today we'll be studying land transport. आज हम लैंड ट्रांसपोर्ट के कुछ नाम और उसको रिकॉग्नाइज करेंगे फ्रॉम येलो बुक. ओके, लेट्स स्टडी फ्रॉम येलो बुक फर्स्ट. Now we'll recognize the pictures which is given here. We'll study page number 30 and 31 today. Okay, so these are the land transport we'll study. This is cycle. Okay, second is scooter, third one is motorbike, fourth is bullock cart, fifth is rickshaw, next is tonga, next is auto rickshaw. Now we'll come to the next page. This is bus. This is a double decker bus. This is a car. And this is truck. And last is jeep. This is a jeep. Now you can see this is 2-wheeler and this is buses 4-wheelers. बस में कितने व्हील्स होते हैं? बस में, कार में 4-wheeler. Now we have recognized all the pictures of land transport. Now we'll study the question given here. Who drives the bus? बस को ड्राइव कौन करता है? ड्राइवर drives the bus. बस को ड्राइव कौन करता है? ड्राइवर. The second question is, how many wheels does a car, scooter, cycle has? So कितने wheels होते हैं हमारे पास? कार में we have 4 wheels, scooter में we have 2 wheels and cycle में we have 2 wheel. Okay. Now we'll come to our notebook.
Today we'll learn means of land transport. Just now we have studied the 3 modes of transport, 3 means of transport हमने पढ़े थे. So we'll study the names of land transport today. Okay, what is the date? 1st October 20. We'll write down the date. SL in the corner. Heading means of land transport. Okay, we have 8 means of land transport written over here. So we'll study the 8 names today. Okay, first one is car. CAR, car. Second one is bus. BUS, bus. Third one is jeep. JEEP, jeep. Fourth one is cycle. CYCLE, cycle. Fifth one is truck. TRUCK, truck. Sixth is scooter. SCOOTER, scooter. Seventh one is motor bike. MOTOR, motor. BIKE, bike. Next is tonga. TONGA, tonga. We'll repeat again. Car, means of land transport. First one is car, bus, jeep, cycle, truck, scooter, motorbike, tonga. Okay, now we'll quickly revise what we have studied till now. अब तक हमने क्या पढ़ा, हम फटाफट से वो रिवाइज करेंगे. ओके, ट्रांसपोर्ट. व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. किसी भी एनिमल, गुड्स और ह्यूमन का मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट. हाउ विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? वी यूज़ ट्रांसपोर्ट to go from one place to another. We mostly use every day. From going to one place to another, we need a transport every day. Okay, so we have studied 3 modes of transport. Means, mode or types, you can say anything. Okay, so we have studied 3 means of transport, that is land transport, air transport and water transport. Okay, so first one is land transport. Vehicle runs on road are called land transport. जो रोड पर व्हीकल्स चलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. लाइक कार, बस, ट्रक, ट्रेन एक्सेट्रा, ये सब क्या हमारे लैंड ट्रांसपोर्ट है. नाउ व्हीकल रन्स इन एयर आर कॉल्ड एयर ट्रांसपोर्ट. द एग्जाम्पल इज एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर. एंड थर्ड वन इज वाटर ट्रांसपोर्ट. Vehicle runs in water are called water transport, like ship and boats. Okay, now we'll again recognize quickly: cycle, scooter, motorbike, bullock cart, rickshaw, tonga, auto rickshaw, bus, double decker bus, car, truck and jeep. So we have recognized the land transport today, and now we'll recognize names. Now we'll study the names. Means of land transport. First one is car, bus, jeep, cycle, truck, scooter, motorbike, tonga. Okay, these are 8 names you have to write down in your notebook neatly and carefully. Okay students, I hope it is clear to you. Thank you all of you.